Good morning to all the students of class 6. Most welcome to all of you. This is Karunesh Misra, subject teacher of social study. Dear students, today I am going to explain you the question paper of periodic assessment 1 for the academic sessions 2021 and 22. This question paper is of 50 marks and durations of time is 2 hours. So within 2 hours you will have to complete all the question answers. First, go through the instructions which is given at the top of the question paper. Read all the questions carefully. Attempt all the questions as directed. Marks are given against each questions. Dear students, first question is tick the correct answers. Multiple choice type of questions. You will have to choose the correct options given below the questions. First question is how many types of galaxy are there? The option is 1, 2, 3 and 4. Option A 1, option B 2, option C 3 and option D 4. You will have to choose the correct one. Tick the correct one. So how many types of galaxy are there? You just tick the correct options among these. Second question, what is the term used for the group of stars? तारों के समूह के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ऑर्बिट, ऑप्शन बी गैलेक्सी, ऑप्शन सी कॉन्स्टेलेशन एंड ऑप्शन डी यूनिवर्स. You will have to tick the correct options for the question number 2. Third question, what is found between Mars and Jupiter? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्या पाया जाता है? There are 4 options A, B, C and D. You will have to choose the correct one. Number 4 questions, the ring of this planet are very visible. Same as given above. There are 4 options Jupiter, Saturn, Mars and Venus. Correct. Tick the correct options among these. Number 5 questions, Halley is a name given to a star, to a comet, to a moon or to a galaxy. So which one will be the correct among these options? Dear students, question number 2 is the fill in the blanks type questions. You will have to fill the blanks with the appropriate words in order to complete the sentence. The first fill in the blanks is an asteroid is a rocky celestial body that orbits the. You will write the rest words in this fill in the blanks to complete it. Second, fill in the blanks, gap has recently been classified as a dwarf planet. So write the correct word, appropriate word in this fill in the blanks to complete it. Number 3, planet gap is a unique, it support life on it. So which planet is a unique planet and support life on it? You will have to write the appropriate word in this blanks. Number 4, planet gap takes minimum time to complete one rotation. So which planet takes minimum time to complete one rotations? Write the name of that planet in this fill in the blanks. Number 5, are the imaginary lines that run vertically from north to south. So dear students, you will have to write the name of the imaginary lines that run vertically from north to south in this fill in the blanks. Number 6, globes are the closest representations of the. So you will have to write the globe are the closest representations of the. So as I have explained you during the class, so you will write the appropriate word to complete it. Number 7, the earth rotate on its axis from which directions to which? You will have to write in this fill in the blanks. Number 8, the earth has been divided into gap, heat zone or thermal zone. You will have to write the appropriate word in this fill in the blanks to complete the sentence. Okay dear students, now come to the question number 3. Give one word for the followings.
Dear students, here you will have to write one words for the statements given. Question number 3. Number 1, the fastest rotating planet. Here you will have to write the name of the planet which rotate very fastly. Number 2, 1 year of this planet is almost 165 years on the earth. Here you will have to write the name of the planet of which 165 years is equal of which 1 year is equal to the 165 years on the earth. Number 3, the being their lives as a nebula. Here you will have to write about the heavenly bodies which begins their life as a nebula. Number 4, group of stars with some imaginary shape. So dear students, you will have to write the name of the group of stars, that means constellations, with some imaginary shape. I hope you all know the group of stars with some imaginary shape. So you will write the name of those group of stars with imaginary shape. Now dear students, number 5, distance in space travel by light in a year. You will have to write the measurement of distance in a space which is expressed as so you will write over here. Question number 4, now answer the following questions. Here you will have to write the answer of the questions to the point. Why are the three different types of what are the three different types of galaxy we know? Dear students, you will have to write about the three types of galaxy which you know. तो आपको यहाँ पर 3 तरह के जो है गैलेक्सी के बारे में जो है लिखना है. सेकंड क्वेश्चन है वाई डू कॉमेट्स हैव टेल. जो कॉमेट्स होते हैं उनका टेल क्यों होता है, जिन्हें हिंदी में पूछल तारा कहा जाता है. तो वाई डू कॉमेट्स हैव टेल, you will write the answer of these questions to the point. Name the dwarf planets in our solar system. You will have to write about the dwarf planets in our solar systems. So you will have to mention the name of all the dwarf planets. Question number 4, who was Sir Sanford Fleming? So dear students, सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग कौन थे? यू विल हैव टू राइट अबाउट द सैनफोर्ड फ्लेमिंग हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज IST? हियर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, सो यू विल रेक्टिफाई इट. डियर स्टूडेंट्स, हियर यू विल राइट करेक्ट इट. व्हाट इज IST? दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है एंड हाउ इज़ इट डिटरमाइंड, और इसको कैसे निर्धारित किया जाता है. ओके, सो हियर यू विल राइट अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड हाउ इज़ इट डिटरमाइंड, और कैसे इसको निर्धारित किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स दैट आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब्स. क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 6 नंबर आप देखिए. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स दैट आर ड्रॉन द ग्लोब्स. ग्लोब्स के ऊपर वे महत्वपूर्ण जो है अक्षांश रेखाएं कौन कौन से हैं विच आर ड्रॉन और विच आर सपोज टू बी ओवर देयर. सो यू विल हैव टू ड्रॉ द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब. नाउ question number 7, what is Greenwich meridians? Here you will write about the Greenwich meridians. Dear students, now question number 5, answer in detail. You will have to write the answers of these questions in a details. Above question number 4, you will have to give the answers of the question in brief, and here question number 5 you will give the answer in detail. So the first question is what is torrid zone? Torrid zone क्या है? You will have to write it in detail.
एंड सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर ग्लोब हेल्पफुल टू अस? ग्लोब हमारे लिए उपयोगी कैसे है, तो क्यों है? यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिटेल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, I am going to explain you the history, second part of the social study. So first you will have to write the true for the correct one and false for the wrong one statement. So number one, the Arthashastra, the periplus of Ithorians, sea and geography of India are example of secular literary source. So in the box you will have to write true for the right one and false for the wrong one. Second, the Himalaya region range acted as a natural barrier separating India from the East Asian countries. हिमालय की जो पर्वतीय जो श्रृंखलाएँ हैं, जो श्रृंखलाओं का जो क्षेत्र है वो नेचुरल बैरियर का काम करता है, जो कि इंडिया को ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो अलग करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये सही है तो आप यू विल राइट T which stand for true, and if it is wrong you will write F for the false or for the wrong one. Number 3, inscription, monuments, coins, other objectives and artifacts are archaeological source. So if it is correct, write tree, or if it is wrong, write false. Number 4, literary that has no connection with religion is called secular literature. Same here, you will write T for the right one and false, F for the wrong one in the box. Now question number 2, dear students, match. Here is a printing mistakes, it will be MATCH. Match the following. Here you will have to match the words of column A with the words of column B, with the correct word of column B. So dear students, first one is the Khan. It is you will mention here number 1, 2, 3, 4 and 5, and column B you will write A, B, C, D, E and F, and you will match the correct words with the correct one of column A. Okay, dear students. So number 1 is Khan, number 2 is Megasthenes, number 3 the geography of India, number 4 is Banbhat, number 5th option is Angkor Wat, number 6 is the Soar Temple. Here also 6 words are given which you will have to match with the correct one of column A: Cambodia, Mahabalipuram, Harshcharita, Greek ambassador, Rajtarangini and Ptolemy. Okay dear students, now come to the question number 3 of history. Answer the following. So dear students, here you will have to write the answers of the questions in a brief. So first questions, define the period in the past which is called proto history. आपको टाइम पीरियड ऑफ प्रोटो हिस्ट्री लिखना है. सेकेंड क्वेश्चंस, सो यू विल हैव टू डिफाइन द पीरियड इन द पास्ट विच इज़ कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, और यू विल हैव टू डिफाइन द प्रोटो हिस्ट्री. सेकेंड क्वेश्चंस, वाई इज़ क्रोनोलॉजी इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी अतीत का जो क्रमिक अध्ययन है उसका क्या महत्व है. यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चंस, define artifacts. So dear students, here you will define about the artifacts which are the sources to know the ancient history. Number 4, what role did the Himalayas play in framing the history of the subcontinent. आपको यहाँ पर लिखना होगा कि हिमालय की क्या भूमिका है भारत के जो है इतिहास में, निर्माण में ऐतिहासिक क्या भूमिका जो है. फिफ्थ क्वेश्चंस, हाउ आर द सेकुलर लिटरेरी सोर्स डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस लिटरेरी सोर्स. जो सेकुलर लिटरेरी सोर्स है वो रिलीजियस लिटरेरी सोर्स से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द civics, third part of social study.
Dear students, in question number 1, you will have to write the true for the correct answers T in the box given at the right hand side of the questions. Number 2, the Dargah of Khwaja Minuddin Chishti is in Ajmer in Gujarat. If it is right, write T, or if it is wrong, write false. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak are famous Indian freedom fighter. महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक भारत के जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं. तो यदि ये सही है तो आप ट्रू लिखें, और यदि गलत है तो फॉल्स लिखें बॉक्स में. नंबर 4, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री है. तो आप जो है यहाँ बॉक्स में जो है लिखें ट्रू या फॉल्स. आप यू कैन राइट टी और फॉल्स ऑल्सो. द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. तो इसके बारे में भी आपको लिखना है. और डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2, मैच द क्लॉमन्स. यहाँ पर आपको जो है वर्ड्स दिया हुआ 2 क्लॉमन है, क्लॉमन ए एंड क्लॉमन बी. आपको क्लॉमन ए के वर्ड्स को क्लॉमन बी के वर्ड्स से मैच करना है जो सही हो और एक दूसरे से मिलता जुलता हो. तो पहला ऑप्शन है पंजाब, फिर है घूमर एंड कांची गोडी, तीसरा है कथकली, चौथा है मुन्नार, पांचवा है फेस. और क्लॉमन बी में फर्स्ट वन है फोल्क डांस ऑफ राजस्थान, सेकंड बी ऑप्शन है हिल स्टेशन, सी कोस्टल एरिया, डी भांगड़ा एंड गीदा, and E classical dance of Kerala. So you will have to match these words from column A to column B with the right and appropriate one. Okay, now question number 3, answer the following questions. Dear students, write the answers of these questions in a brief. सो नेम द माउंटेन रेंज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया. भारत के जो उत्तर में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलर. सेकुलर का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग है. नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. भारत की मुख्य और जो है सेकेंडरी जो कार्यालयी भाषा है वो क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिटेज. हेरिटेज का मीनिंग क्या है. ओके डियर स्टूडेंट्स, so these all are of 50 marks, and you will have to complete this within 2 hours. Okay dear students, so first you will go through all these question and answer. Use a okay dear students, first use a pencil to choose the correct options or fill in the blanks, or for the true or false. After that write the question of answers to the appropriate, to the point. Marks will be detected for spelling mistakes, bad handwriting and untidiness. Okay dear students, thank you for listening me. Have a great day to all of you. Best of luck to all of you for your examinations. That's all.